everyone, welcome to my channel. My name is Ananya Jain. So by now you all must have definitely read the caption. So yes, it's an educational video and it's part 2 of the GD series, that is the group discussion series. So I've already uploaded part 1 of this series wherein I've talked about what exactly a group discussion is and what do the interviewers check in your group discussion. So I'm going to link that in the description box and also on the screen somewhere. So do not forget to check that video as well after you watch this video till the end. And in today's video, I'm going to talk about some of the most common mistakes which are made in the group discussion. So please watch this video till the end. So starting with the first and the most common mistake made in a group discussion, that is to not pay attention to the topic itself. It's very important for you to pay attention to the topic, because if you ask them, like, can you please repeat the topic or something like that, it gives a very negative impression to the interviewer. It shows them that you were not paying attention, you were not being attentive, you were physically present there but you were not mentally present there, and it's kind of negative. So please avoid such things and pay attention to the topic from the very start. So the second common mistake is to not take initiative. See, in a group discussion, nobody is going to ask you that, Ananya, it's your turn to speak now, or, it's your turn to speak now. Nobody is going to ask you. You just have to grab the opportunity as and when you get it, and you just have to start speaking. So that's something which is in your hand and you have to take care of it. All right. But कई बार क्या होता है, बहुत बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं कि चलो अभी इसके बाद बोल दूंगी, इसके बाद बोलूंगी, इसके बाद बोलूंगी, and you just keep on waiting for the opportunity. ऐसे तो आपको कभी नहीं मिलेगा and you will be speaking in the end. There's no harm. आप जब भी it's जीडी में क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक, बट अगेन आप लास्ट में बोलेंगे तो क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ योर पॉइंट्स जो होंगे वो ऑलरेडी कवर हो चुके होंगे, बिकॉज ऑफकोर्स सो मेनी पीपल हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, नो, सो दे आर ऑल्सो गोइंग टू स्पीक सम और द अदर थिंग, तो मेजॉरिटी ऑफ पॉइंट्स कवर हो चुके होंगे. सो इवन इफ यू हैव थॉट ऑफ सम पॉइंट्स इन योर माइंड एंड आपने नहीं बोले, यू कांट से टू द इंटरव्यूअर कि पता है मैंने तो सोच लिए थे, बस बोले तो नहीं. यू वोंट बी जज्ड ऑन दैट, यू विल बी जज्ड ऑन व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप फर्स्ट प्लेस पे नहीं बोल रहे हैं, ट्राई इट ऑन द सेकंड प्लेस. सेकंड पे नहीं तो एट मैक्स ट्राई टू स्पीक ऑन द थर्ड प्लेस. ठीक है, और ट्राई कि फर्स्ट 5 में आप बोल लें. इफ यूर 10 पीपल का ग्रुप है, सो ट्राई टू स्पीक इन द फर्स्ट 5 मेंबर. Coming to the third common mistake, that is to take wrong initiative. Now this is kind of related to the previous point which I made, which was about taking initiative. Now अब मैंने initiative लेने के लिए बोल दिया तो a lot of people will think कि बस बोलते ही चले जाओ. That is again wrong. A lot of people what they do is, suppose somebody is speaking, so it's very important to give them their time. It's very important कि आप उनको complete करने का time दें. But a lot of people, they just cut them off and just start speaking. That is wrong initiative. Again, if somebody is trying to make some point and you want to add to it, let them finish first, take the opportunity and then add to it, or agree or disagree. But a lot of people, they try to elaborate on it but somehow repeat the same point, which is again wrong. It's kind of a wastage of time, right? So please avoid taking wrong initiatives. Speak whenever it's required, wherever it's required. Just do not unnecessarily speak in the group discussion just to show that you are speaking. Make valuable points as well. So this one is the most commonly made mistake in a group discussion, that is to shout. So I have already talked about it in my previous video, wherein I said that group discussion is not a debate. A lot of people get confused that it's a debate. You don't have to prove your point to be absolutely correct, or you do not have to prove that the other person's point is absolutely wrong. It's not like that. It's just that you're given a topic and you have to discuss on that with all the team spirit that you have. It's very important. But what do people do is that they shout. Even if you disagree to somebody's point, if I disagree to your point, I'm not going to shout on you कि नहीं तू तो गलत ही है, तू बिल्कुल गलत बोल रहा है, and I cannot really accuse. That's your opinion, right? And this is my opinion. So a lot of people shout in a group discussion, which again gives a very negative impression to an interviewer. So please refrain from shouting in a group discussion. Keep it very healthy. So the fifth most commonly made mistake in a group discussion is to speak too long or too short.
See, group discussion में there are a lot of people and you have limited time on in which you have to talk on a particular topic, right? So you don't have all the time in the world कि आप ही वहाँ पे खड़े होकर बोलते रहेंगे and you won't give an opportunity to others as well. It's very important कि आप बाकी को भी chance दे बोलने का, right? And आप बोलते नहीं रह सकते हो because you can even get cut off कि नहीं अब you stop talking and let others also speak. ऐसे भी होता है. So make sure कि you're not speaking too much. बहुत लंबा आपके points नहीं हो. When you have made certain points in your mind, ना make sure कि when you're putting them in front of everybody else, just put them in a manner कि वो बहुत लंबे भी नहीं हो, बहुत short भी नहीं हो कि शुरू होते ही खत्म हो गया. It should not be like that. It should be short and crisp. आपका opinion, आपके points भी convey हो रहे हैं. Others also get an opportunity to talk, you know, or elaborate on those, and they also get a chance to speak their own points as well. So it's very important to keep that thing in mind as well. So the sixth most commonly made mistake is to not listen to others. And personally मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा ये mistake करी जाती है. So whether you have spoken or not, it's very important that you pay attention to what others are speaking. See, अगर आप already बोल चुके हैं इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप दोबारा नहीं बोल सकते. Of course, you can speak, you can add your points, you can add your opinions. Suppose somebody said something and आपके पास personal life के experience से कोई example है. So of course you can elaborate on that by giving that example. So you are adding a valuable point to the discussion, right? So you can do that. But that can only happen if you listen to them carefully. Secondly, अगर आपने नहीं बोला है अब तक, then it's very very advantageous for you because आपके खुद के points तो हैं, आपके पास कुछ और टॉपिक के ऊपर कुछ और पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने का भी चांस मिल गया है. सो यू कैन इलेबोरेट ऑन दैट एज वेल, राइट? इट्स गुड फॉर यू. ऑल्सो अगर आप नहीं सुनते हैं, उससे एक और मिस्टेक बहुत ही कॉमनली करी जाती है, वो होती है दैट यू रिपीट पॉइंट्स, राइट? सो सपोज यू आर नॉट लिसनिंग टू समबडी, आपने सुना तो है नहीं, आपका चांस है आपने वही पॉइंट्स रिपीट कर दिए. सो वहां पे यू विल गेट कट ऑफ कि नो यू हैव ऑलरेडी टॉक्ड ऑन दिस, सो प्लीज डोंट रिपीट. सो ऑफकोर्स एम्बैरेसिंग तो होता ही है ना कि आपने रिपीटेड पॉइंट बोल दिया. सो इफ यू डोंट लिसन, आप ये मिस्टेक करेंगे कि आप पॉइंट्स रिपीट करेंगे. ऑल्सो आई हैव टॉक्ड अबाउट इन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि आप I think I've talked about in the listening skills वाला point था एक, उसमें I've talked about कि when you're listening, you can simply nod as well. If you agree to somebody, you can nod or you can just smile. Because A, it will give the other person a lot of confidence, and B, it will show that you are paying attention to what the others are saying, which is again very important in a group discussion. Okay, so the next point is, I don't know whichever point this is because I've lost count, but the next point is to start an argument. So I've already talked about this in my previous video and बीच में मैं इसके बारे में बार बार बोल रही हूँ. So I'm not going to elaborate a lot on this. So you can check the previous video and I'm going to keep it brief. So all I'm trying to say is that, you know, you don't have to start an argument. Like I always say that there is a way to disagree to somebody as well. आप एकदम से argument नहीं start करेंगे. And group discussion में आप अपनी ओपिनियन रखने आए हैं, आप किसी की ओपिनियन चेंज करने नहीं आए. ठीक है, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका ओपिनियन सुनने के बाद द अदर पर्सन चेंजेस और नॉट, दैट इज समथिंग विच इज नॉट इन योर हैंड्स एंड यू शुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट इट. ऑल्सो आपको क्या फर्क पड़ता है वो चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है, आप बस अपनी ओपिनियन दो ना. So even if you disagree, you should not start an argument, you should not start a fight, you should not start shouting on the other person, which is again very negative because वो दिखाता है कि आप you're not open to suggestions, you're not open to opinions. आप क्या ही ओपिनियन लोगे, आप क्या ही टीम वर्क में काम करेंगे, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट नहीं करें ग्रुप डिस्कशन में. Okay, so the next common mistake is to state wrong facts and figures, and it is the most commonly made mistake again. See, it's very good if you include facts and figures in your points because it shows your subject knowledge, it shows your clarity of the topic, it shows your clarity of the concept, and it gives you an edge over other contestants or whatever, other people. But there are times when people state wrong facts just to show कि हाँ हमें बहुत knowledge है. So please keep this in mind कि interviewers को पूरी अच्छी खासी knowledge होती है. They are just trying to assess your knowledge on the same topic. एंड वो आपको तभी की तभी कैच कर लेंगे कि आपने रॉन्ग फैक्ट्स बोले हैं. एंड इट्स नॉट जस्ट एम्बैरेसिंग ऑफ कोर्स, बट इट्स अ बिग ड्रॉबैक फॉर यू बिकॉज पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं जस्ट टू सपोर्ट योर पॉइंट्स. सो इन प्लेस ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू इज कि आप एग्जैक्ट फिगर्स या फैक्ट्स मत दो, आप
परसेंटेज की फॉर्म में दे सकते हो, या फिर आप कुछ ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस यूज कर सकते हो जिससे आपके सब्जेक्ट नॉलेज भी कन्वे हो एंड आप पकड़े भी नहीं जाओ कि आप रॉन्ग फैक्ट स्टेट करें, जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज, मतलब वट एवर इट इज, यूज सच फ्रेजेस टू सपोर्ट योर पॉइंट्स. सो दैट्स अ वेरी गुड hack for facts and figures, and refrain from stating wrong facts and figures. So the next point is to have a very fast or very slow speed. So now I understand that I recently said कि you don't have all the time in the world कि आप बोलते रहेंगे, ठीक है, so you can't be very slow, ठीक है, but that does not mean कि आप बहुत फास्ट बोल रहे हैं, करके बोल रहे हैं, ठीक है, वो बहुत नेगेटिव है, बिकॉज ए उससे किसी को कुछ समझ नहीं आएगा एंड दिल भी लाइक कि क्या बोल रहा है या क्या बोल रही है, राइट. सो इट्स वेरी रॉन्ग, यू कैन नॉट डू दैट. प्लस अगर आप बहुत स्लो भी बोल रहे हैं, उससे क्या होगा कि इतने स्लो में कि यू नो वॉट दिस इज वॉट आई फील, you can't do that also because they'll be like कितना बोरिंग है and just finish it up. Also हो सकता है कि आपके पास बहुत अच्छे पॉइंट्स होंगे बट सिंस यू आर सो स्लो कि वो आपको बीच में कट कर देंगे, तो आप वो अच्छे पॉइंट्स नहीं दे पाएंगे डिस्कशन में. यू वोंट बी एबल टू एड वैल्यूएबल पॉइंट्स टू द डिस्कशन. सो मेंटेन अ नॉर्मल स्पीड मेंटेन करो जो सबको समझ भी आए. यू कैन क्विकली फिनिश इट ऑफ ऑल्सो एंड बहुत फास्ट भी नहीं लगे. ऑलराइट. So the next common mistake is interrupting others repeatedly. Again, this is somewhat related to the point which I've already made, wherein I talked about the wrong initiative. So even if you have to agree, you have to disagree, you have to add some point related to it or whatever it is, you cannot just repeatedly interrupt. You can interrupt once or twice, but आप बार बार किसी को नहीं interrupt कर सकते because it is very very irritating and I feel that it should be unacceptable in a group discussion because आप बार बार तो नहीं ही interrupt कर सकते. So please do not interrupt repeatedly. The next common mistake is to make irrelevant points. Now suppose you are given a topic on global warming and you are talking about marriage. Of course ऐसे नहीं होता है, मतलब I understand that everybody is sensible enough कि वो इतना भी irrelevant points नहीं बोलेंगे, but I'm just giving example कि global warming भी है तो stick to the points which revolves around global warming या somehow related है global warming से. Do not make irrelevant points जिससे आपका टॉपिक जो है वो डेविएट हो जाता है, बिकॉज कई बार होता है ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक डेविएट हो जाता है एंड देन अगेन वन पर्सन हैज टू टेक द इनिशिएटिव टू ब्रिंग बैक द ग्रुप टू द मेन टॉपिक. सो जस्ट अवॉइड मेकिंग सच पॉइंट जिससे आपका टॉपिक ही डेविएट हो जाए. Also, just avoid giving emotional reactions when it comes to a group discussion. जैसे कि आप किसी चीज़ को लेके sad हो जाएं या फिर if you somebody said something जिससे आपको बहुत गुस्सा आए. Of course गुस्सा आएगा, I understand, but keep your emotions to yourself. Don't get angry then and there. Alright, don't develop feelings like hatred towards somebody. Just keep such emotions aside. The focus should be on giving your points, trying to listen to what others are saying, and just avoid giving emotional reactions. Another most common mistake made in a group discussion is to give a fake accent. Now I understand that एक group discussion में सबसे important चीज़ जो वो check करते हैं that is your communication skills, your command over a particular language, be it your English or Hindi or whatever language it is. उसके बाद they check other things like your teamwork spirit, your leadership skills, या फिर how much accommodative you are to others' opinions and suggestions. These are certain things जो बाद में check करी जाती हैं. But the most important thing is your communication skills. But कुछ लोगों को लगता है कि अगर आप फेक एक्सेंट में इफ़ यू टॉक लाइक दिस तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी मानी जाएगी. इट्स वेरी रॉन्ग. आप नॉर्मल कम्युनिकेट करेंगे द वे यू स्पीक नॉर्मली, आप उसमें भी बात करेंगे, दे आर जस्ट गोइंग टू चेक योर कम्युनिकेशन, उससे भी एनालाइज की जा सकती है. तो आप फेक एक्सेंट आपको देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट फेक एक्सेंट जब भी आप देंगे उन्हें पता चल जाएगा दैट यू आर गिविंग अ फेक एक्सेंट, विच इज़ अगेन एम्बैरसिंग. पर्सनली फॉर मी इट्स वेरी एम्बैरसिंग. सो प्लीज़ avoid giving fake accents in a group discussion. The next commonly made mistake is to have a bad posture. So I have already talked about posture in my previous video in good detail. So इसमें मैं बहुत ज़्यादा time waste नहीं करूँगी. It's just that when you sit there is a proper posture of sitting. When you stand there is a proper posture of standing as well. And अगर आप उस posture को नहीं maintain करते तो of course it does not really give a good impression. So try and maintain a good posture when you are standing or sitting and having a group discussion.
Again, very commonly made mistake, that is to have low confidence. Now it's not something which is in your hand. I totally understand that, there are some people who are very good, they have very good confidence. There are some people who are nervous and they're low on confidence. But one thing that you need to keep in mind when you are going for a group discussion is that आप उस अपना लो कॉन्फिडेंस को शो नहीं करो सबको, that मैं बहुत नर्वस हूँ या फिर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो है. आई टोटली अंडरस्टैंड, बिकॉज दैट कॉन्फिडेंस ऑल्सो कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. सो बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सबको दिखाएं. जैसे कि आई टॉक्ड अबाउट इन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि कुछ लोग ऊपर इधर उधर देख के बात कर रहे होते हैं एंड दे आर नॉट ट्राइंग टू मेंटेन एन आई कॉन्टैक्ट. दैट शोज दैट यू आर लो ऑन कॉन्फिडेंस. एंड नाउ आई कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं कि आप पूरा ऐसे ऐसे करके घूर रहे हैं जिससे भी आप बात कर रहे हैं. दैट इज अगेन स्कैरी. Just maintain a decent eye contact if you're confident enough. Otherwise, even if you're not that confident, just don't show it by your gestures. Alright, it's very important to keep it to yourself. Just show them that you're very confident even if you are not. Again, a key here is that if you feel that आपका confidence अच्छा नहीं है या नहीं हो पाएगा या आपको किसी particular चीज़ को लेके लगता है you are not confident, suppose your communication skills, your vocabulary or whatever it is, I would say that start right today. अगर आपको अभी लगता है and you feel that you are going to face a problem in the future when it comes to interviews or group discussion, start working on it right away. Finally comes the last commonly made mistake, that is contradicting one's own points. Now again, ये काफ़ी जगह होता है just because हम इतने nervous होते हैं या हमें लगता है कि जितने ज़्यादा points दे पाऊँ मैं उतने बोल दूँ. उस हबर तबर में, उस excitement में, उस confusion में a lot of people contradict their own point. Suppose अभी मैंने कुछ बोला, उसका next ही line मेरा contradicting है, तो वो मेरे को तभी point out कर देंगे. But now अभी तो आपने ये बोला और अभी आप बिल्कुल contradict करके बोल रहे हैं. एंड नॉट जस्ट इन दैट केस, अगर आप किसी और के पॉइंट में भी ऐड कर रहे हैं तभी भी आप कॉन्ट्रडिक्टिंग हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि देर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु आर डिस्कसिंग, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इग्नोर हो जाएगी आपका कॉन्ट्रडिक्शन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू थिंक बिफोर स्पीकिंग. ऐसा नहीं कि बस बोलने के चक्कर में कुछ भी बोले जा रहे हैं. जस्ट थिंक बिफोर स्पीकिंग सो दैट यू डोंट कॉन्ट्रडिक्ट योर ओन पॉइंट्स. So I think that's it for today's video. If you were able to gain at least this much of knowledge from this video, please hit the like button. Share it to as many people as possible. If you know someone who is going to appear for group discussions or interviews in the near future, do share this video with all of them. Also let me know your suggestions and feedbacks for me in the comments section. Subscribe to my channel if you still haven't. And मैं हर बार बोलती हूँ, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब भी कर दिया है पर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, आपको कोई नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे whenever I'll upload a video on my channel. So please press the bell icon, and thank you everyone for watching this video till the end.